Now we'll discuss about the first chapter of physics 11th standard, that is unit and measurements. तो units and measurements में पहले तो introduction discuss करता है units and measurements के. अभी बहुत सारे question arise होने चाहिए कि भाई कुछ question explore करते हैं. Let us explore some question कि why does the rainbow have a specific color pattern. वो जो विबग्योर होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जो विबग्योर पैटर्न होता है, तो विबग्योर पैटर्न में वायलेट और रेड ही एक्सट्रीम क्यों होते हैं, उसका वेवलेंथ जो है वो कैसे मेजर कर सकता है. तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसके बेसिस पे. वो एक बेसिक क्वेश्चन है. फिर हमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्स जो है क्या एक्चुअली में ट्विंकल करते हैं कि हमें अपीयर होता है जो ट्विंकल कर रहा है वो. So this is also the question. Then one more question, that what is meteoroid, जो गिरता है. कभी कभी हमें फोरकास्ट करके हमें बताते हैं कि ये रीजन में मेटेरॉइड गिरने वाला है, वो रीजन खाली करो. सो व्हाट इज मेटेरॉइड, दिस आर द क्वेश्चन, राइट. तो ये सारे क्वेश्चन में दिस आर द क्वेश्चन, राइट. तो ये सारे क्वेश्चन में हमें क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता होगा, क्यों हो रहा है ऐसा. एंड देन curiosity leads to the science. When you are curious about something, you think about science. And what is science? Science is nothing but the systematic knowledge. कोई भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज़ को अच्छे से मेजर करना, वही साइंस है. तो क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल मटेरियल थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द experimentation. We have to observe the things, we have to do the experimentation, कि how it is, what it is and why it is. We must get the answer of all these questions. And then वो जो observation किया है वो कोई एक particular object का होगा कि वो rotate कर रहा है, उसका dimension क्या है, वो 3 dimension है कि 2 dimensional है. So we have to have the observation of all that fundamental things, right. And then ऑब्जर्वेशन करके एक्सपेरिमेंटेशन भी करना पड़ेगा. एंड देन ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आगे ऑब्जर्वेशन नीड नॉट बी ऑलवेज करेक्ट. जो हम देख रहे हैं शायद ऑलवेज सही ना हो, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि द समथिंग अपीयर्स टू बी रेड बट दैट माइट नॉट बी रेड, समथिंग अपीयर्स टू बी ऑरेंज दैट माइट नॉट बी ऑरेंज. तो एक्चुअल क्या है उसकी वेवलेंथ निकालेंगे, कितना नैनोमीटर आ रहा है, ऑरेंज और रेड का कितना नैनोमीटर होता है, उसको कंपेयर करके हम इन्फरेंस पे आ सकते हैं, हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं. जस्ट मियर ऑब्जर्वेशन इज नॉट 100% एब्सोल्यूट. तो व्हेन यू ऑब्जर्व दिस, ये जो रेलवे ट्रैक है वो पैरेलल दिखने में नहीं दिखते, बट वो एक्चुअली पैरेलल ही होते हैं, ठीक है. तो ये जो रेलवे ट्रैक्स है वो एक्चुअली पैरेलल है, बट व्हेन यू ऑब्जर्व इट तो वो आपको पैरेलल नहीं दिखेंगे. तो ऑब्जर्वेशन हमेशा सही ही हो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. तो एक्चुअली ट्रैक्स आर पैरेलल जैसे यहाँ पर लिखा है. सो कैन ट्रस्ट ऑन द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी. फाइन, विदाउट एक्सपेरिमेंट यू कैन नॉट से कि बस आई ऑब्जर्व दिस एंड दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट. नॉट एट ऑल. We have to do the experiment of that particular stuff, right. So for that we require the precision calculation. Example in Ohm's law, जैसे Ohm's law की बात करें तो we need to measure the things for accurate result. जैसे Ohm's law की बात करें तो Ohm's law में क्या था, V is equals to IR is a basic Ohm's law, right. हाँ, तो हमें उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल जैसे ओम्स लॉ है कि वी से V इज इक्वल्स टू IR, सो वी से द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस, बट दैट मे नॉट बी कांस्टेंट ऑलवेज. फाइन, फॉर दैट वी हैव टू हैव सम एक्सपेरिमेंटेशन. सो we need to measure the things for accurate results. वो कितना accurately हम find कर सकते हैं, that is very important, ठीक है.
So the purpose of experiment is to establish the law, and hence the measurement the different physical quantities is extremely important. But what is physical quantity? हम बार बार बोल रहे हैं कि we must have observation, we must do experiment, we must have an experimentation. But what do we mean? What do we supposed to have an experiment on? A physical quantity. So now the question arises that what is a physical quantity? So let's discuss about that. Okay, so that leads to very important topic, the measurement of physical quantity. So now the question is, what is physical quantity? We'll discuss on that also. So let's understand some term. So let's understand some terms before we start the topic, actual topic of the measurement. What are the quantity? What are quantities called in physics? That are physical quantities. Weight है, length है, height है, temperature है, pressure है, टाइम है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है. वी हैव इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स. These are the some example which you can observe over here, but we have infinite physical quantities. Okay, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में जो भी पैरामीटर मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है. उस फिजिकल क्वांटिटी को कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ यूनिट होगा, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. ओके, सो लेट्स मूव. फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मैंने बताया, ये लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उनको हम मेजर कर सकते हैं. दैट कैन बी मेजर. सो इफ इट दैट कैन बी मेजर, so that will have some magnitude and a unit. So the magnitude मतलब कितना, how much. So that how much का जवाब है उसका magnitude. It means that can be measured. For example, if we have a length, it could be 20 meter, it could be 40 meter, 45 centimeter, 9 inches. So unit can be different, but वो 9, 45, 2.5 वगैरह वगैरह जो भी है, that is the magnitude. Okay. Then example, जैसे length, mass, velocity, temperature, area, volume, density, etc. These are measurable. और उसको यूनिट होगा. फॉर एग्जाम्पल लेंथ है तो यूनिट होगा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड ऑल. मास है तो किलोग्राम होगा, ग्राम होगा, वगैरह वगैरह. देन वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, एट्सेट्रा. देन वी हैव टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन में मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहीट में मेजर कर सकते हैं. एरिया इज मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, डेंसिटी इज mass upon volume, that is kg per meter cube. So these are measurable quantities, and not only this much, we have infinite measurable quantity. That means we have infinite physical quantities that can be measured. Okay, so आगे जाते हैं अभी. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना. तो उसमें एग्जांपल्स दिए हैं, लव, हेट्रेड, लाइक, एट्सेट्रा. तो ये सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटी है. सो व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिक्स में जो भी पैरामीटर्स है, जो भी क्वांटिटीज है दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, एंड द वन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी. So let's think about some MCQs. So the question is, which one of the following is not a physical quantity? We just now discussed, so I'll give you some time, 5 seconds, 10 seconds, you have to discuss, and then I'll tell you the answer. So we have the 4 options: length, mass, time and air. What's the question? I am repeating the question, which one of the following is not physical quantity? So out of 4, length, mass, time and air. Length is a physical quantity, mass can be measured, time can be measured, so all 3 are physical quantity. Air is not a physical quantity. So yes, it is correct. Air is not a physical quantity, because I repeat, what is physical quantity? The quantity or the parameter which can be measured is known as physical quantity, and the parameter which cannot be measured is known as non-physical quantity. So let's move ahead. Next is so let's move ahead. Next is second question, which says which one of the following is a physical quantity? So we have options like acceleration, then like, dislike and head rate. So out of this, which can be measured? Acceleration can be measured, and all rest of the 3 cannot be measured, hence those are non-physical quantity. But what's the question? Which one is the physical? So first, acceleration is the physical quantity. Yes, it's
correct. So what is physical quantity? One which can be measured. And what is non-physical quantity? One which cannot be measured. Fine with this? Okay, अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? आगे we have third question. Curiosity leads us to. तो क्या आएगा? Science, only observation, only experimentation and none of the above. तो आगे क्या है? Curiosity leads us to, और 4 ऑप्शन दिए हैं. अभी आगे देख, अभी आगे ऑब्जर्व करते हैं. फाइन. तो आगे क्या है? करेक्ट. तो अभी आगे डिस्कस करते हैं. आगे क्या है? आगे क्यूरियोसिटी लीड्स अस टू. वी हैव क्यूरियोसिटी लीड्स अस टू, वी हैव 4 ऑप्शन. साइंस, ओके. तो आगे क्या है? लेट्स चेक इट आउट. आगे इज curiosity leads us to. Let's check it out the options. Science, then only observation, then only experimentation and none of this. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि क्यूरियोसिटी होगी, so it leads us to science, right? So answer is option A. Yes, it is correct.